Assalamu alaikum. Let's discuss today regarding electronic commerce, electronic business, and the internet business models. As I said in my last lecture, again that was on ERP. That in the next lecture we're going to discuss about electronic business, electronic commerce, and the internet business models. What are these, and how can we take advantage of the new business models, and how can we develop these business models, right? So again, many of us know about the type of internet businesses that are coming up each day, right? Many of us are involved in buying or selling different type of products on the internet using different platforms or using their own, what we call in inverted commas, I would say virtual storefronts, right? This is a technical term. We'll come to it in later in this lecture. What is virtual storefront and what qualifies it to be a virtual storefront, right? So many of us are doing that. Many of us are not doing that, but many of us are buying products and different things from different websites. I would generally call them website. Again, not naming any business models at this stage, but obviously every website that we buy things from represents a different internet business model, right? Represent a different e-commerce or it is an e-business. There's a difference between e-commerce and e-business. We'll come to that. There's a minor difference. Again, e-commerce is a subsidiary, subset of e-business. We can say that e-commerce is just about buying and selling things online, and e-business is about encompasses it. E-business encompasses everything that includes buying and selling. That includes the business model. That includes the revenue model. That includes all the marketing aspects of it and all the other things as well, right? So again, there was a time when the World Wide Web was invented in again in 1989. Tim Berners-Lee, he came up with this idea, and he explains it in his book Weaving the Web, how he came up with this idea of developing the World Wide Web. So Tim Berners-Lee is the inventor of the World Wide Web, along again with the people he was working with. So again, then it was initially thought to share information only, right? But later on, obviously, there were stores that came up. Again, the e-commerce stores that came up, they would buy and sell stuff, and people would, who had access at that point in time, again, would buy that stuff. Again, it became popular in 1995. After again in 1994, Windows was introduced as a operating system and people started using it, and again the PC revolution began. And in 1995, which was the year when Netscape, the famous browser which we no longer use, it went public. So again, having a browser, because before that it was all console based browsing that we could do, anyone could do. So again, the browser, invention of the browser, and again, when it was made available to public in 1995, again, that formed the basis of the revolution that we are now in, the e-commerce or the e-business revolution that we are now in. Again, we have such famous names like Alibaba, and we have again many other different famous web stores which were previously doing or using this bricks and mortars model, and now they are using these online business models. तो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे अपनी सर्विसेज को वो सेल करते हैं। लेट्स से अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं। वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं फॉर द वर्ल्ड टू हायर। वो भी एक बिजनेस मॉडल है। अगेन अपवर्क का अपना एक बिजनेस मॉडल है। दे ऑल्सो अर्न रेवेन्यू यूजिंग दैट। देयर इज दिस ईबे। लोकली अगर हम बात करें तो देयर इज दराज जिसपे आप अपना स्टोर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज होम शॉपिंग जिसपे प्राइमरली तो इट इज अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट, मगर उस पर अपना स्टोर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड देयर आर शॉपिफाई है। ये सारे नाम शायद आप लोगों में से कुछ के लिए नए हो, बट आई होप दैट आफ्टर हियरिंग दीज नेम्स you would go and find out the details of what these are and what kind of things they offer. Park Wheels है जो कि स्पेसिफिक एक नीश मार्केट को टारगेट करता है, गाड़ियों के मार्केट को। And there are many other local businesses as well that have been prospering, especially in the times of COVID. Again, because a lot of business
has shifted online. तो और उसकी वजह से बहुत सारे और सब्सिडरी बिजनेसेस जो हैं वो भी डेवलप हुए हैं. अगेन जस्ट लाइक डिलीवरी सर्विसेज हैं वो भी डेवलप हुई हैं बहुत सारी, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं तो उनको एक डिलीवरी सर्विस भी चाहिए होती है उन तक पहुंचाने के लिए. तो डिलीवरी सर्विसेज ने भी बहुत पाकिस्तान में स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स जो है वो सामने आए. और इसके अलावा और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं. तो अगेन ईच एंड एवरी डे द न्यू बिजनेस मॉडल्स आर डेवलपिंग एंड दे आर कमिंग अप. एंड जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थे उनको हम अब इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मॉडल्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन इसी तरह से एक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपने एयरलिफ्ट देखा, आपने सिविल देखा, सेफर एक ऑप्शन अब मौजूद है, करीम और उबर की तो हम बात करते ही रहते हैं. ठीक है, तो ये सारे वो बिजनेसेस हैं जो कि बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ दिस मोबाइल कॉमर्स, ये अगेन इन्वेंट हुए और ये वजूद में आए और अब दुनिया इनको इस्तेमाल कर रही है. राइट, तो अगेन दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. आई विल बी ब्रीफ क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा देर तक एक लेक्चर देखना इंटरनेट पे इशू होता है. तो आई विल बी मेकिंग शॉर्ट अगेन लेट्स से 20-25 मिनट्स लेक्चर्स ऑन दीज. दो तीन लेक्चर इसी हवाले से होंगे. तो आई विल बी शेयरिंग सम स्लाइड्स अगेन जस्ट टू इंट्रोड्यूस as to what it has done. Again, what it has done mean okay, electronic commerce, electronic business, what it has done, and how is this important for us, right? So digital firm, obviously, we try to understand, we'll try to understand how internet technology has changed the value proposition in business models. Value proposition, what value that comes out of a business, right? And what is the value that it adds to the society that we live in? And what is a business model? Again, we will talk about what a business model is in the later. We need to understand what constitutes a business model. What are the aspects, what are the attributes of a business model? What comprises a business model? And how do we shift from the conventional business model to the internet-based business models that we are now using very extensively? What is electronic commerce? How has electronic commerce changed consumer retailing and business-to-business transactions? And again, what are the principal payment system for electronic commerce? एक चीज जो मैं भूल गया था अपने इंट्रोडक्शन में बताना, कि पेमेंट मैकेनिज्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो ऑब्वियसली it has to have a payment mechanism as well. Pakistan में again initially when we were not sure as to we could use credit cards or debit cards online because a lot of security issues were there. People were reluctant to use it. We were not sure about the security of our credit card numbers and all that. So we were very reluctant. So again, we invented with a new way of doing business that was COD, cash on delivery. तो हम करते ये थे कि जी ऑर्डर कर दिया, अब कैश ऑन डिलीवरी होगा, यानी पेमेंट उस वक्त होगी. जब उसके अपने ऑब्वियसली इश्यूज रहे, उसके अपने प्रॉब्लम्स रहे. Then again, over time, we have overcome those problems, and now we are again at a stable position in the COD payment principal payment system mechanism as well. And we'll see how internet technology supports management and coordination of internal business processes and supply chain management. Because again, in ERP lecture, we saw why supply chain and value chain is important and what is the value proposition that it adds. If the supply chain is better managed, it helps businesses sustain and grow as well. So we'll see how internet technology has changed this coordination of internal business processes and how has it supported the management of an organization. What are the major managerial and organizational challenges? And what are the opportunities that lies for an organization and its management? So management challenges are an emerging digital firm. So we need to be alert all the time because the digital firm is emerging. Again, it is just like having to say that I've always said that if the rate of change outside your organization is greater than the rate of change inside the organization, the end is in the inside. राइट, आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द चेंजेस हो रही हैं, लोग तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑफरिंग ई कॉमर्स सर्विसेज, और आप खुद नहीं कर रहे वो काम, तो ऑब्वियसली आप खुद ही अंदर से खत्म हो जाएंगे. एंड वी हैव सीन दैट एज वेल in yesterday years as well, and again even today in the previous year हमने देखा वो businesses जो कि ऑनलाइन या ई कॉमर्स की तरफ या ई बिजनेस की तरफ नहीं गए, वो जब सिचुएशन बदली, जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कोविड सिचुएशन में हम आए, तो वो लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए, उन्हें अल्टीमेटली उस तरफ जाना पड़ा. बट अगेन वो फिर लेट
कमर्स हो गए उस सिचुएशन में, और वो लोग जो कि पहले कहीं नहीं थे वो एक बड़ी अच्छी जगह पे पहुंच सके. तो अगेन द डिजिटल फर्म इज ऑलवेज इमर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज देयर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, अगेन we've talked about the difference. Electronic commerce is buying and generally speaking, although all differences are, generally speaking, electronic commerce is buying and selling of stuff online, and electronic business encompasses everything, the business models and the payment mechanisms and all that, right? And or a lot of other things as well. We'll talk about this in or यही है basically हमारा objective समझने का. And obviously there are lots of challenges and opportunities. Challenge तो सबसे बड़ा ये है कि वो firm जो कि conventional firm थी, वो organization जो कि conventional organization थी, उसको अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की तरफ कैसे लाया जाए, क्योंकि लोग तो वही हैं. इवन अगेन इन एकेडमिक एनवायरनमेंट, वो टीचर जो आपको खड़े होकर क्लास में पढ़ा दिया करते थे बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन उतना ही अच्छा पढ़ा पाए, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ चैलेंज फॉर देम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक टेक्नोलॉजी से उतना ज्यादा एक्वेंटेड नहीं है. तो दैट इज अगेन अ चैलेंज, एंड ऑब्वियसली दैट इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल. अब अपॉर्चुनिटी ये है कि you can have a global reach. Again, while I'm recording this lecture, I'll be uploading it on my YouTube channel which has a global reach, और हमें ये पता है कि जी वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से लोग देख भी सकते हैं, देख भी रहे हैं. And again, it has given this opportunity to all of us to have this global reach. So again, as I said, digitally enabling the enterprise requires a new mindset. Obviously, it is a new mindset that you need to have in finding a successful business model. What is the business model? आपका बिजनेस कुछ और था, आपने बिजनेस मॉडल कुछ और इंप्लीमेंट करने की कोशिश की उस पर, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट द रिजल्ट विल नॉट बी गुड इन योर फेवर. सो अगेन यू नीड टू फाइंड अ सक्सेसफुल इंटरनेट बिजनेस मॉडल एज वेल. तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटल फॉर्म, वी ऑल नो, कुछ उसकी बात कर लें. इट प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंड इजी टू यूज सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन सेट बाय स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स, बीच में पहले जो इंटरमीडिएट लेयर्स थे वो खत्म हो गई हैं. अब आप डायरेक्टली जूता खरीद सकते हैं नाइकी स्टोर से ऑनलाइन. पहले आप डीलर से खरीदते थे, अब आप डायरेक्टली खरीद लेते हैं. पहले आप रिटेलर से खरीद लेते हैं, अब आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं. तो दैट हैज रिमूव्ड, इंटरनेट हैज रिमूव्ड दीज इंटरमीडिएरी लेयर्स बिटवीन. राउंड द क्लॉक सर्विस है, आप रात को 12 बजे भी कोई चीज खरीद सकते हैं. अगेन इट इज 24 आवर्स अवेलेबल. ऑर्डर्स जो है, पहले तो शॉप जो है वो उसके खुलने का बंद होने का एक टाइम था, अब you can order at any point in time. Extended distribution channels, outlet created for attracting customers who otherwise would not patronize. अब इंटरनेट के थ्रू वो लोग जो बाजार आना नहीं पसंद करते थे, आराम से अपने घरों पे बैठ के आपके जो स्टोर्स हैं उनको विजिट कर लेते हैं. ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई है. पहले जो बायर को अपने आप तक लाने की कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खर्च करनी पड़ती थी मार्केटिंग के नाम पे, वो कम भी हो गई है, और अब उसका एक डिफरेंट यूज भी सामने आ गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अब हम चले गए. तो और जो कि एक और एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, और एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. इतना बड़ा एस्पेक्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग पे ही अकेले कोर्सेज जो हैं वो हो रहे हैं और वो हो भी सकते हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स एंड जो डिजिटल मार्केटिंग की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स have reduced. So again, business models होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है. Business model defines an enterprise. An enterprise, again, a business which encompasses and which has again at least 5 functional areas, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं. पहली क्लास में हमने बात की थी मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स. ये अगर फंक्शनल एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो बहुत बड़ी एंटरप्राइज है. So again, that is enterprise को define करता है business model, how that enterprise delivers a product. Primarily, how an enterprise creates wealth. That is what a business model is, right? It shows how the enterprise creates wealth. अच्छा, wealth का मतलब ये नहीं है कि पैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है? It is not how the enterprise creates money or how the enterprise creates profits. It is how the enterprise creates wealth. Wealth में obviously एक value proposition आ जाता है कि what kind of value does it add to the society. One, what kind of, क्योंकि जितने लोग enterprise में काम करते हैं
अगर वो उनको सैलरी देने के काबिल होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो दे गो एंड प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन द सोसाइटी। वो पैसे मिलते हैं उनको, वो खर्च करते हैं सोसाइटी में, एंड दैट इज अगेन हाउ अ लॉट ऑफ अदर पीपल जनरेट देयर इनकम। और वो फिर उनकी दुकानों पे जहां से वो चीजें खरीदते हैं, एंटरप्राइज में काम करने वाले लोग, वो अपने शॉपकीपर को या अपने सेल्स पर्सन को वो उनको सैलरीज देते हैं। तो अगेन दैट इज व्हाट creates the social atmosphere, एक जो पूरा इकोसिस्टम बनता है वो। तो एंटरप्राइज हाउ इट क्रिएट्स वेल्थ, दैट इज व्हाट अ बिजनेस मॉडल डिफाइंस। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं अभी कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, दूसरा कैपेबिलिटीज, और तीसरा वैल्यू। अभी नहीं है, थोड़ी सी बाद में आएगा, हो सकता है आज के लेक्चर में नहीं, ये दूसरे लेक्चर में हो। आज के का मतलब इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा होपफुली उसमें हो। तो इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ हैज दे चेंज्ड over the again over the last again many years basically। अब तो क्योंकि काफी वक्त हो गया है, लेकिन ये कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पिछले 2-3 सालों की बात है। ये पिछले डेकेड की बात है, और उससे पहले वाले डेकेड की बात है, जिसमें ये सारी चीजें बदल गई हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गई है। वन पार्टी इन ट्रांजैक्शन हैज मोर इन्फॉर्मेशन देन द अदर। ये पहले होता था। अब आपके पास बाज दफा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप रिव्यूज पढ़ चुके होते हैं, आप कंपैरिजन पढ़ चुके होते हैं, आप यूट्यूब पे, जो कि एक और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मल्टीमीडिया कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप बहुत सारा कंटेंट देख चुके होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो आपने अभी खरीदी नहीं है, जो आप खरीदने जा रहे हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं। तो अगेन अब इंफॉर्मेशन सिमेट्री है। बाद दफा आपके पास अब ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। पहले तो आप सिर्फ शॉपकीपर पे डिपेंड करते थे। जो कन्वेंशनल ब्रिक्स एंड मोटर्स मॉडल था, आप जाते थे, आप उससे कहते थे भाई ये चीज इसमें क्या खुसूसियत है, आप पूछते थे। लेकिन नाउ इट इज available, the information is available, and you can access to whatever information the shopkeeper has access to. So again, increased richness, depth and detail of information is available. Increased reach, number of people that have that can be contacted have now increased. So again, this has enabled new levels of richness and reach, right? As you can see in this diagram के reach भी बढ़ रही है और richness भी बढ़ रही है। यानी ज्यादा लोगों तक और ज्यादा किस्म के लोगों तक, not just in terms of number but in terms of the geographic expansion of a business, वो भी ज्यादा हो रही। ठीक है, एंड रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा बेहतर और ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ऑल्दो कि हम ये कहते हैं कि जी इंफॉर्मेशन हाईवे है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन ये कि उसमें से काम की, उस डेटा में से काम की इंफॉर्मेशन निकालना और उसमें से नॉलेज निकालना, वो भी एक बड़ा काम है, और वो भी एक पूरी एक फील्ड है डेटा साइंस की, जिस पे हमने भी शुरू में कुछ थोड़ी सी बात की थी। तो अगेन दीज आर द चेंजिंग इकोनॉमीज of information, and today we say that we live in the information age। बहरहाल ये भी एक डिबेट है कि इंफॉर्मेशन एज है, ये इंटरटेनमेंट एज है, या कौन सी एज है। तो इस पे भी खैर कभी बात करेंगे। तो अगेन दिस हैज गिवन राइज टू इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल्स तो पहले जो होते थे वो यही होते थे ना कि भाई एक दुकान खोल ली किसी ने, अब वो दुकान पे कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट्स लेके आएगा, वो दुकान पे डिस्प्ले करेगा, रखेगा, कोई बायर आएगा, वो चीजें खरीदेगा, और वो फिर हर चीज पे प्रॉफिट बनाएगा सिर्फ। दैट वाज द बिजनेस मॉडल। और उसकी एडवर्टाइजिंग कहीं कर देगा, कहीं बिल बोर्ड लगा देगा कि जी ये स्टोर है। दैट वाज द बिजनेस मॉडल। ब्रिक्स एंड मोटर्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट हैज गिवन राइज टू न्यू टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स, राइट? लाइक वर्चुअल स्टोरफ्रंट्स। प्रीवियसली देयर वर ओनली स्टोरफ्रंट्स। मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद इनकी डिटेल्स, इनके क्वेश्चंस क्या होते हैं कि व्हाट क्वालिफाइज सम बिजनेस टू बी अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट और एक्सचेंज और अ मार्केट प्लेस और अ कंटेंट प्रोवाइडर, वॉट एवर। वो उसके कुछ कुछ चीजें हैं, फिर इनका बिजनेस मॉडल, इनका रेवेन्यू मॉडल, इनका कॉस्ट मॉडल, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वर्चुअल स्टोर फ्रंट इट सेल्स, इट बेसिकली जस्ट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक concepts of it। Information broker provides information on product pricing etc, just like again virtual storefront की अगर हम बात करें तो there is telemart जो कि virtual storefront है। home shopping is a virtual storefront। और बहुत सारे इस तरह के जो लेट्स से गुल अहमद की साइट है, जो सफायर की साइट है, जो कि जीन की साइट है, जो कि और इस तरह के स्टोर्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना दी है। उनका एक फिजिकल स्टोर भी है, वो फिजिकल स्टोर में
ऑब्वियसली ड्यूरिंग द सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी सेल्स से, उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना दी। अब वो दे हैव अ वर्चुअल स्टोर फ्रंट, तो वो जो प्रोडक्ट उनके पास इन्वेंट्री में ऑलरेडी मौजूद थी वो वही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। Then that is what qualifies it to be a virtual storefront. Sells goods and again it can also sell services online. Information broker जो कि इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में, एक वेबसाइट रेट से व्हाट मोबाइल है, दैट इज इंफॉर्मेशन ब्रोकर। अच्छा, इसी तरह से कुछ न्यूज़ वेबसाइट भी हो सकती हैं जो कि आपको न्यूज कंटेंट प्रोवाइड करें। रूटर्स है फॉर एग्जांपल, ग्राफिक कंटेंट, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि सेल करती हैं, आपको लोगोज बना के दे देती हैं आपके लिए, ग्राफ वो बेच रही होती हैं। फोटो स्टॉक है, इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ट्रांजैक्शन ब्रोकर बायर्स व्यू रेट्स टर्म्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अगेन दे ब्रोकर अ ट्रांजैक्शन, यानी आपको कोई इंश्योरेंस करवानी है अपनी गाड़ी की, तो अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू लेट्स से आदमजी इंश्योरेंस, यू कैन गो टू एनी अदर, और कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं मुझे नहीं नाम याद आ रहे, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है A B C D, उनके पास आप गए, हर एक से आपने रेट ले लिए, तो हुआ ये कि आपको हर एक के पास अलग अलग जाना पड़ा। देयर वाज नो सिंगल पॉइंट वेयर यू वुड बी एबल टू कंपेयर ऑल दिस। तो ट्रांजैक्शन ब्रोकर क्या करते हैं, वो आपको इन सब चीजों के रेट्स एक साथ दिखा सकते हैं, और आप वहीं पे रेट देख के वहीं पे टर्म सेटल करके आप उन्हीं के थ्रू ही, अगर आप उनके थ्रू करते हैं तो ट्रांजैक्शन ब्रोकर का बाद में ये मॉडल होता है कि वो कमीशन चार्ज करते हैं। आपको नहीं पता होता वो, लेकिन ये कि वो फिर आप कंपेयर कर लेते हैं और उसमें कंपटीशन में आपको बेहतर रेट्स भी मिल जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन ब्रोकर इस तरह के काम करते हैं। देन देयर आर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एज वेल। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो करंट सिनेरियो में हो सकती है मार्केट प्लेस की, पहले हम जब दराज नहीं था तो ईबे की एग्जांपल लेते थे, विच इज एन एक्सचेंज। ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज दराज। मार्केट प्लेस बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई संडे बाजार होता है जहाँ पे आप जाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, अपना स्टॉल लगाने के या तो कुछ पेमेंट देते हैं, एक मॉडल ये हो सकता है, या एक मॉडल ये हो सकता है कि आप अपना स्टॉल लगाएं और जितनी सेल हो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो आप जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको दे दें। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज जस्ट लाइक दैट, इट्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जस्ट लाइक दराज। दराज जो है वो अपने आप को एडवर्टाइज करती है, और अपने आप को एडवर्टाइज करने के बाद आपसे कहती है आप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं, और आप अपना स्टोर जब सेटअप कर लें तो आप अपना स्टोर सेटअप कर लें और उसके बाद आप एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आप जब कोई सेल होती है तो वो दैट इज देयर रेवेन्यू मॉडल, वो चार्ज करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे ऑपरेट, राइट। Yeah, content providers as well creates revenue through providing clients for a fee and advertising जो डिफरेंट तरह का कंटेंट, जस्ट लाइक अगेन हमने बात की पहले कि there's YouTube that provides content, वो तो खैर एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आता है और तरह से आता है, बट अगेन दे कैन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स, कोई डिजिटल कंटेंट है, कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है, इस तरह का कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स that are there on the internet। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, सर्विसेज फॉर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से आपको सिस्टम स्कैन की सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, आपको कोई लेट्स से बहुत सारी सर्विसेज है। आपने एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसकी ऑनलाइन सर्विस मौजूद है। आपने किसी एक फाइल को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसकी सर्विस, एंड देयर आर सेवरल अदर ऑनलाइन सर्विसेज। आपको ईमेल प्रोवाइड कर देता है कोई, अगेन चार्ज भी करते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्चुअल कम्युनिटी, चैट रूम, ऑनलाइन मीटिंग प्लेसेस, अगेन वी नो अबाउट ऑल दीज वर्चुअल कम्युनिटीज, फेसबुक एंड ऑल अदर सोशल नेटवर्क्स। इसमें जो बिजनेस या एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस हैं, ऑब्वियसली दे आल्सो हैव अ रेवेन्यू स्ट्रीम एंड रेवेन्यू मॉडल एज वेल। इवन फेसबुक, ऐसा तो नहीं है ना कि फेसबुक नहीं कमा रहा, आपको पता है कितना कमाता है, एंड वो उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वो उसके रेवेन्यू मॉडल्स हैं, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम होता है। तो पोर्टल, अगेन अब तो पोर्टल बहुत कम हो गए, लेकिन ये कि देवर पोर्टल्स एट अगेन इन 1995-96 में बात कर रहा हूँ, देवर पोर्टल्स ओनली वेब स्पेसेस थी, ठीक है। याहू था, नेटस्केप था, अगेन फिर बाद में एमएसएन पोर्टल्स आए, ये पोर्टल्स आए व्हिच वर कंसीडर्ड टू बी इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री टू द वेब, एंड अगेन दे हैड इनिशियली दे हैड स्पेशलाइज्ड कंटेंट एंड सर्विसेज दैट वर देयर। Then syndicators, जो कि online content providers थे, that aggregates information from several sources sold to companies। Again हमने routers की बात की, हमने information agencies की बात की, news services की बात की, जो कि different type of information मुख्तलिफ जगहों से लेके
मुख्तलिफ कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट इसमें इंटरप्रिटेशन इसकी हो सकती हैं, बहुत सारी तरह के सिंडिकेटर्स हैं अवेलेबल। विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दिस। मैंने कहा था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर कि इन वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब की बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिजनेस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है। एंड देयर आर ऑप्शन साइट्स, अब तो खैर ऑप्शन बिल्ट इन होते हैं बहुत सारी चीजों में। एंड अगेन इनका फायदा क्या है कि जी डायनेमिक प्राइसिंग है, रियल टाइम इंटरेक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स हैं, दैट इज व्हाट डिटरमिन्स। एडवर्टाइजमेंट्स हैं, अब तो बैनर ऐड के बजाय अब तो डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कैटेगरीज 3-4 जो भी हमारे पास हैं, business to business, B2 business to business, B2B, business to customer या business to अगेन कस्टमर जो है वो बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, और वो कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस प्रीवियसली बिटवीन अ कस्टमर एंड कंज्यूमर। अगर मैंने नहीं किया तो प्लीज ट्राई एंड फिगर आउट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कस्टमर एंड अ कंज्यूमर। तो ये कैटेगरीज है। उसके अलावा G2C भी एक कैटेगरी है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन के वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ द टैक्स रिटर्न्स हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि जी अगर आपको कोई कंप्लेन है तो सिटीजन पोर्टल एक बना दिया उन्होंने, कहा कि यहाँ पे लॉन्च कर दें। इस तरह की जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है वो G2C कैटेगरी में आती है, गवर्नमेंट टू सिटीजन कैटेगरी में, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर ये अगेन देयर आर सेवरल डिटेल्स। ये अब हम अभी यहीं तक इसको रखते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें आई विल बी कवरिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज बिजनेस मॉडल्स एंड व्हाट क्वालिफाइज देम टू बी इन व्हिच कैटेगरी, what is this paradigm shift, and how do we cater to the changing requirements of the information systems and internet based information systems in the current scenario, right? Thank you very much. Allah Hafiz.